You are watching Travel World Online. वेलकम कॉलेज जी टू ट्रैवल वर्ल्ड ऑनलाइन। नमस्कार। नमस्कार सर। कॉलेज जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एबीटीओ की पिछले एक वर्ष की जो गतिविधियां हैं वो क्या चल रही हैं। सबसे पहले तो सबको धन्यवाद and thank you very much to all, because ABTO is not only for one places. This is the more than 25 countries, and this is the heart of 25 countries. So within 1 year in around especially Nepal, Sri Lanka, Thailand, and Myanmar, and even Bangladesh also, ABTO is doing a very nice job. एक साल के अंदर सर हम लोगों ने बहुत कुछ किया। 10 दिसंबर से आप आए थे सर, तो आप देख रहे हैं ना सर। और अभी ताजा उदाहरण है सर कि गुजरात में हम लोगों ने 50 लोगों के साथ, हमें बताया गया था, टारगेट दिया गया था कि 50 लोगों के साथ, 50 टूर ऑपरेटर के साथ आप गुजरात आइए। और हम लोगों ने गया सर, और वहां पे देखा कि कितना अच्छा मॉन्यूमेंट्स है, और जिसको हम प्रमोट नहीं करते हैं। ज्यादातर गुजरात के लोग आउटबाउंड जाते हैं, विदेश जाते हैं, या फिर डोमेस्टिक करते हैं, लेकिन कभी भी वहां पे बहुत कम ही ऐसे ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर हैं जो सेकंड बुद्ध गया बनाए, जो सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज वालों को बताए कि अशोका का, चंद्रगुप्त मौर्य का वहां पे मिला हुआ है एविडेंस। जूनागढ़ है और भी बहुत सारे जगह हैं, अशोका लिटरेचर है वहां पे। तो कल्चर के साथ में और बहुत सारे ऐसे हैं, बर्ड नगर जो मोदी जी का बर्थ प्लेस है, वहां देखिए लेडीज का पहला कहते हैं कि यूनिवर्सिटी था, तो वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी बन रहा है बर्ड नगर में। तो कहने हम ये कहना चाहते हैं कि एक साल के अंदर हम लोगों ने पूरे ऑल ओवर एशिया कंट्री, स्पेशली नाइबरिंग कंट्री, और हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं सर। अभी पिछले बार तो हम लोग हेरिटेज वॉक किए थे, वेबिनार बहुत ज्यादा कर रहे थे। इस साल हम लोगों का 10 दिसंबर के बाद ये थीम है कि नहीं, जगह जगह जा करके टीम बना करके उस जगह को एक्सप्लोर करिए, क्योंकि अब कोरोना समाप्त हो चुका है। अब कोरोना के बाद हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया कि कैसे टूरिज्म को 400%, मोर देन 400% इंक्रीज करें, तो उसके लिए क्या करना होगा, साइट पे जाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने यहाँ लखीसराय के पास आए हुए हैं। लखीसराय मुश्किल से 150 किलोमीटर है वहां से, बुद्धगया से, और राजगीर से लगभग 70-80 किलोमीटर है सर। जैसे रोड बन गया, 2 घंटे 3 घंटे रास्ते का जर्नी है सर। और बुद्धिज्म का मेन सेंटर रहा था सर। कहते हैं पद्म संभव जी का यहाँ जन्म स्थान है, यहीं से पद्म संभव जी तिब्बत गए। अब बताइए सर, उतने बड़े स्कॉलर शांतरक्षित और कमलशील के साथ गए, जो कि बुद्धिज्म का नींव डाले, वहां के लोगों को एजुकेट किए, और उसके बारे के उस जगह के बारे में नहीं जानते सर। यहाँ पे कहते हैं कि ये काली पहाड़ी है, लाल पहाड़ी है जयनगर में, जहाँ लेडीज के लिए बहुत बड़ा, यहाँ की महारानी ने लेडीज भिक्षुनी के लिए दान किए थे, जिसपे वो बसा हुआ है सर, मोनास्ट्री बसा हुआ है सर। तो हम ये कहने का मतलब है कि एजुकेशनल टूरिज्म है, हिस्टोरिकल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, फिर उसके बाद आपको बुद्धिस्ट टूरिज्म, फिर उसके बाद वर्ल्ड लाइफ टूरिज्म। इतने बढ़िया घोड़ा कटोरा के जैसा भी यहाँ पे डैम है सर, नेचुरल ब्यूटी है सर। तो इसको प्रमोट हम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण सर फॉरनर तो दूर, डोमेस्टिक लोग नहीं आते थे। ये बुद्धिज्म में कम से कम फॉरनर लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उसका मेन सेंटर रहा था। लेकिन हम प्रचार प्रसार के अभाव के कारण इस जगह को हम डेवलप नहीं कर पाए। कुछ हमारा हिस्टोरिकल प्रॉब्लम भी रहा सर, कि जैसे 1192 में इसको सब चीज जला दिया गया, बख्तियार खिलजी, और जो भी कारण रहा हो सर, हमारा इतिहास गायब हो गया, बीच में टूट गया था सर। लेकिन अब क्या हुआ कि अब हमें पता चल रहा है, तिब्बत से पता चल रहा है, हमारे बगल में बैठे हुए हैं अशोक बाबू, स्कॉलर हैं तिब्बत का, जो बताते हैं कि तिब्बत में इस जगह को क्या चीज कहा जाता है। और ये लगभग 20 सालों से लगे हुए हैं इसको एक्सप्लोर करने में, स्पेशली होनसांग पे बहुत सारे वर्क कर लिए हैं, और ये इस जगह को डेवलप कर रहे हैं। उसी के कारण आज हम यहाँ आए हुए हैं सर, और 2 दिनों से हम इस जगह पे घूम रहे हैं सर। अब हम ये कह सकते हैं सिर्फ मॉन्यूमेंट्स ही नहीं है लखीसराय में, कण कण में भगवान यहाँ बसे हुए। जिस गांव में जाइए कुल देवता आपको मिल जाते हैं बुद्धिस्ट का। जिस गांव में जाइए कम से कम 10-12 स्टैचूज मिल जाते हैं बुद्ध का, उनके शिष्य का, पद्म संभव का, ये सब सारी चीजों का है सर। और इसके बारे में लामा तारानाथ भी बहुत अच्छे लिखे हैं सर, जो तिब्बतियन स्कॉलर है सर। अशोक जी आपके साथ है, तो उनसे बात करना चाहेंगे, जो यहाँ पर बता रहे स्कॉलर हैं, जो अगर वो आपके साथ हैं तो उनसे कुछ जाने इसके आगे बारे में।
जी 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 लखीसराय जी आदरणीय अशोक बाबू जी. So I'm a businessman, Okay. and but I had a interest on history from my college days. Okay. We discussed history, and basically there's one place called Lali Pahadi up here. When excavation started over there, I started going there every day. In fact, I took a cake over there. जो एक्सकवेटर्स था, ये लोग शांति निकेतन के स्टूडेंट्स थे, तो उन लोग के लिए नाश्ता वगैरह सब हम अपना पॉकेट खर्चा से ले जाते थे, खिलाते थे. And I used to watch them daily. And then I started studying Yun Sang. So I bought CU key, and then like I read that he had come to Lakhisarai. So I got interested, but sir, I got my foot mark of Yun Sang in what do you call it? One place called Ashok Dham up here, which Yun Sang says the Deva temple south of the Ganges, richly adorned. So that is just around 1 kilometer behind my house. So I started tracking Yun Sang. Yun Sang, he gives very accurate directions and mileage in leads. So I started tracking Yun Sang backwards. And then from one page to another page, see, the historians haven't taken his directions and his mileage literally. And I gave him the benefit of doubt, and I tracked him literally, and I saw each place was connected to each other all the way to Bahraich. All the way to Bahraich in UP. It is around 800 kilometers from Lakhisarai. I see. So I videographed 180 stupas, and all the local folklore tallied with what Yun Sang wrote. And now that is a different story, because it will cause a lot of contradiction. When Alexander Cunningham and all came here to search, they started the search for Bodh Gaya, Kushinagar, etc. Those days, India wasn't mapped. India wasn't mapped in 1850. India had no schools and colleges in 1850. So there was no educated Indian to help them. The result was whatever they said was taken as in written. So they created all the Buddhist spots. But now what happens is, Ashoka, he identified all the Buddhist spots and he made stupas. Stupas, which you all call topes. अब वो तोप जो है actually उसको, that is a Bihari word, तोपना, मट्टी को तोपना. So what do you call it? ये सारा जो stupas है, they are 1 acre, 2 acres in size. समय के साथ the villagers have settled on top of those stupas. But by doing so, that is a blessing in disguise. By doing so, they kept the stupa's name alive. Now, आज के दिन, modern days, Google Maps में जब Yun Sang को follow करते हैं, तो उसके mileage के मुतालिक वो सारा नाम निकलता है. Good. उसके mileage के मुतालिक वो सारा नाम निकलता है. Like what you call example, there are a lot of examples, and basically I have tracked him. I was just showing him the flight path of Yun Sang from Bahraich to what do you call it, Lakhisarai. And it will create a lot of controversy, so I will not get into that. This is my personal thing, but there are Buddhists following it. And some Buddhists said
It has become our life's job to correct all this. Because if you go to Kushinagar, sir, if you go to Kushinagar, none of it tallies with the Buddhist story. The entire thing doesn't tally with the Buddhist story. Anyway, but my Lakhisarai, while I was doing that, by mistake, I photographed a small statue of a boy on a thing. I sent it to my brother. And the next day, my brother phoned me. He said, Ashok, Guru Rinpoche was from Lakhisarai. I said, you are mad. He said, no, Guru Rinpoche was from Lakhisarai. That was Guru Rinpoche's statue, the photo you sent me. So when he came, we sat down and we started studying the Tibetan scriptures. Sir, Lake Dhanakosha is in Lakhisarai. Urgen in the 7-line prayer to Padma Sambhava is in Lakhisarai. I have just taken Mr. College. Mr. College. Because the queen of Zahor was a Dakini. And today the people pray to Dakini grandmother, who was the daughter of Sahur. So that's where we got the connection of the story. That's where we got the connection. And then we found Lake Dhankosha. According to Tibetan scriptures, there was an island on it in which Padma Sambhava sat. And there is an island in Lake Dhankosha up here. And it is, according to Tibetan scriptures, it was northwest of Uren. And exactly Lake Dhanadi Lake with the Dhankosha Chaitya in the middle, that one is northwest of Uren, sir. And Uren was Padma Sambhava's country. And 2 kilometers southwest of Uren is Sahur, mispronounced as Zahor, with Dakini grandmother's temple in it, which I just showed. Then, see, those days they would have, Hindu and Buddhist fights. So there was a king, Hindu king, who was breaking Buddhist statues. Padma Sambhava went to stop him. What happened was he tried to drown him in the Ganges, but he had meditated in 8 charnel grounds. They are Sheetalvan, that is Shitalastan near Uren. Then there is Suraj Roshni, that is Suraj Gadha on the banks of the ancient Ganges. Then there is Badhaiya, Bhairav, that is Badhaiya, which is still a charnel ground on the banks of the ancient Ganges. So basically these 8 Nandanama, it is still here, sir. Now basically what happened was he had done meditation there. So he had powers, supernatural powers according to Tibetans. He flew out of the Ganges like a vulture. And he got the manifestation, youth like a mighty vulture. That is Bal Guddar. Bal means child, youth, and Gid. Gid is a vulture. And they prayed to Budhan Baba. Bu is Butru, Bacha, and Udan, Budhan Baba. He made the Ganges flow upstream. They pray to Malangsa Baba. Malangsa means Gangetic storms. Malangsa means Gangetic storms. And then they tried to poison him and failed. They prayed to Makarsa Baba. He was like a spider who couldn't be poisoned. Understand? So basically, Bal Guddar, it has the stupa, and then he made the Ganges turn towards the north.
Over there, the ancient riverbed has turned towards the north, just next to the stupa. Even today, the stupa is the name of a ghat. गंगा किनारे जो घाट होता है, वही नाम है. Now, Bal Gudar is the youth like the mighty vulture. What do you call it? There are 3 lakes up here. Kyu Khalding Sal. That is a Tibetan word. Kyu is for Kyul. There is a stupa where they try to burn Padma Sambhava. And what do you call it? They surrounded the fire with sesame oil. So there is a moat around the stupa. That means the sesame oil was there. And then they burnt it. But the sesame oil overflowed and caused a lake to be formed that freed Padma Sambhava from samsara. Now remember the word samsara. Next to that lake is Sansar Pokhar. Sansar Pokhar freed Padma Sambhava from samsara. And then Lali Pahadi. Lali Pahadi, there are 2 hillocks. The red mountain, the copper-colored mountain, according to Tibetans, that is Lali Pahadi, and the black mountain. I showed him the Thanka painting, and I took him to the spot. It was exactly according to the Thanka painting. Now, on top of the copper-colored mountain, the Tibetans say that Padma Sambhava's palace was there. It was the Lotus Light Palace. Now we call that excavated spot Lali Pahadi. Now I showed him the Thanka painting of the Lotus Light Palace and the excavated site. The Thanka painting looked like a engineer's design for the excavated site. They were exact. They were ditto. And then, what do you call it? The names. The names, very interesting. The Tibetans call it the Lotus Light. We call it Lali Pahadi. Now, what is the similarity between the Lotus Light and Lali? Sir, Lotus Light, the lotus is pinkish in color. So when you get the pinkish light, that is early in the morning. So the early morning light in Bihar, we say it is Lali. Yes. Lali, that is the lotus light. Lali Ma. So the names tally, the Thanka painting with the, what do you call it, excavated site tallies, the Thanka painting with the 2 mountains tallies. So what more proof do I need? Perfect. Now, basically, yes, all these, what do you call it, Himalayan people, they are dying to come to Lakhisarai because Padma Sambhava is very important for them. Guru Rinpoche is very important for them. Now, as soon as Bhutan opens, a team is going to come from Bhutan and they're going to stay at in my hotel for free. The royal family is watching me. Oh. Royal family, because I studied in Darjeeling, sir. Okay. We studied in Darjeeling and we had a lot of Bhutanese friends. And now they are the top shot officers. So they are helping me. They are helping me. Sir, Lakhisarai is going to beat Bodh Gaya. See, these will supplement each other, in fact. See, Buddhist, Yes. when you talk of Buddhist circuit, this becomes a perfect circuit. Yes. And so what I Yes. appreciate is, what you are talking about is a very interesting story, right? And it seems you have done a lot of work, and it's a lot of homework and hard work on the ground. If you Sir, can- I have identified 50 Buddha's relic stupas. Sir. if you can, Knew the route to that area. And that area, the gurus went from there to Tibet. And what happened is all the gurus are from Lakhisarai district. Padma Sambhava, Naropa, Tilopa, what do you call it? Tilopa, the entire story is here. Even the prostitute
who, for whom he solicited customers. She is prayed to up here as a village deity, sir. I see. And as a village deity, Tilopa is prayed to as Varun Baba. Naropa is prayed to as, Barabar Baba, because he tried to equalize with Naropa. Barabar Baba. Atisa's name is Chandra Garba, and the whole area prays to Garbhu Baba. Garbhu Baba. I showed him Atisa's house. I showed him Atisa's town. I showed, because see, Atisa, Naropa, Tilopa, they were all contemporaries in the same time. There is a village called Narotimpur, which the Tibetans have mispronounced as Narotapa. Sir, the Americans in Chicago, they have opened a university called Naropa University. And the village up here is up here, Narotimpur. And who is Naropa? He is Barabar Baba. He tried to equalize with Tilopa, Barabar. Tilopa, he flew up. He lived on the banks of the Ganges. He is Varun Baba, Lord Varun in the Hindus. So basically, I have all these places. Now Atisa, to identify where Atisa lives, see the people who, the Tibetan who came to fetch Atisa and took him to Tibet, his name was Lotsawa Gyatso. Lotsawa Gyatso. He came with some gold to give to Atisa from the king. So he came, and in the night time, he came with a Nepalese king. Nepalese king. The Nepalese king, he reached the Ganges, and according to Lotsawa Gyatso, Vikramshila was half a night's journey from the Ganges on top of a hillock. So he reaches the Ganges, and then the king, he uses his influence to get a boatman, and he crosses the river. He leaves these people behind. Now the people are scared that the boatman will come with his gang and they will rob the gold. So they hide the gold in the Ganges, in the sand, and they sleep somewhere else. The boatman next day comes and he picks them up. He says, now let's go. And when they cross over, the boatman says, assures them, now this from here to Vikramshila, it is very safe. You don't have to worry. Have faith in this area. No one will rob you. Go in peace and go and sleep in the portico of Vikramshila. So now to prove that Atisa was there, you have to find the place where they hid the gold, and where the boatman assured them that now have faith. No one will rob you. So just next to the ancient Ganges, where I have identified these places, on the ancient Ganges, the village which settled on top of the stupa is Amanat Sa. Amanat, kisi ka amanat wahan rakha gaya. And this side of the Ganges, where the boatman crossed them over, where he told them have faith, the village is Nishtha. Faith, yeah. Understand, sir? Yeah. So this is proof of Atisa story. And over there they pray to Garbhu Baba, Chandra Garba, that was Atisa's name. And then the place, the town is Vikrampur with Kajra next to it. They are on this side of the road is Vikrampur, on this side of the road is Kajra. Now the Tibetans say Atisa's palace was surrounded by a victory band. Now you are an Indian. Tell me what is a victory band? Sir, आँख में जो काजल लगाया जाता है बच्चे लोग का, that is to ward off evil
to ward off bad luck so that he is successful in all he does. That is the victory band, the Kajal, Kajra in Vikrampur. That is the house of Atisa. वाह, लेट्स आपसे आपका अगला स्टेप क्या है, वीडियो का अगला स्टेप क्या है, इस वर्ष में आगे का क्या रूपरेखा बनाई है आपने? बस सर हम लोग चाहते हैं ना सर कि जैसे बोधगया में हम लोगों ने 4 बार कर चुका सर, बहुत सारे हैं 92 प्लेसेस इंडिया में हैं सर जहां पे टूरिस्ट आना चाहता है, और उस जगह को हम प्रमोट करें ताकि लोगों को देखिए सर टूरिज्म क्या होता है, हमने बहुत खून के आंसू रोए हैं सर कोरोना में, तो ये परिस्थिति नहीं आए। पहले से हम अगर अलर्ट रहते, आज से 50 साल पहले इस तरह का आया था, 70 साल पहले जब हम बच्चे थे तो मेरे दादा दादी कहा करते थे तुम ज्यादा बोलो मत, चाहे तुमको कोरोना घुस जाएगा ढुक जाएगा, ऐसे मतलब कि पॉपुलर था। 50 साल तक कोई डिजीज बड़ा सा नहीं हुआ, हम लोग निफिक्र होकर के सोए रहे सर। अभी आ गया सर, तो हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि कोरोना आए चाहे जो हो, हम लोग क्या करें कि टूरिज्म चलता रहे। इसके लिए क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म, नाइबरिंग टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म, उसको भी पकड़ना है। पहले हम लोग फॉरेनर पकड़ते थे कि ताकि वो हमको पेमेंट करें, अब हम इंडियन भी पकड़ेंगे और उससे हमारा अभी देख लीजिए सर वाराणसी, इलाहाबाद, कोई भी रूम नहीं बचा हुआ है सर। बोधगया देखिए सर, अभी अभी जब जिस होटल में संगम होटल में लखीसराय में ठहरे हुए हैं सर, तो यहाँ सर क्या बता रहे हैं कि हमारा जो मैरिज हो गया, रिंग सेरेमनी हो गया, बर्थडे हुआ, छोटे छोटे जो पार्टियां हो रही है उससे हमारा मेंटेनेंस हो रहा है। तो कम से कम एक खुशी की बात है ना सर, अब कोरोना आए जाए इसी पे हम लोग फोकस करेंगे, छोटे छोटे कॉर्पोरेट को पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे। तो एबीटीओ क्या कर रहा है सर, एबीटीओ एक प्लेटफॉर्म है बिजनेस जनरेट करने के लिए, अपने बिजनेस नहीं करता है लेकिन मेंबर नन मेंबर को और भी लोगों को रोजी रोटी का एक प्लेटफॉर्म है सर। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि कैसे छोटे छोटे शहरों में जाएं, जैसे उड़ीसा में जाएं, गुजरात में जाएं, बड़नगर में जाएं, लखीसराय में जाएं, और वहां पे हम 3 दिन के लिए मार्ट करें, 3 दिन के लिए एबीटीओ कन्वेंशन करें, प्रोफेशनलों को बुलाएं, स्कॉलर्स को बुलाएं, ताकि एक तो कम से कम 100-200 लोग एक जगह पे आएंगे तो उसके बारे में तो कम से कम 100 लोगों को तो जानकारी होगा। जैसे बोधगया में हमने शुरू किया, हम सक्सेस भी रहे 4 बार 5 बार सर, हर लोग जाना, भारत सरकार ने भी हमें एडवाइजर बनाया सर। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि अब जो है हम छोटे बड़े दूसरे जगहों को हम देखें सर, और वहां के लोगों को अवेयर करें कि ये बिना पैसा का इंडस्ट्री है, इसमें इन्वेस्ट करिए, कुछ नहीं समय का इन्वेस्ट करना है, प्रचार प्रसार, लोगों को मीडिया तो फ्री है, आप जैसे सपोर्ट करते हैं सर, आप कुछ नहीं लेते हैं सर, लेकिन कितना हम लोगों को सपोर्ट मिलता है, हर चीज से आपने खुद हमें सपोर्ट किया सर। तो इस तरह से लोगों को एक जगह ला करके प्रचार प्रसार करें, और आने वाला कोरोना चाहे जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हम तैयार रहें, और रोने की अब जरूरत नहीं है सर, वो हम करने जा रहे हैं सर। छोटी छोटी जगहों पे, बड़े बड़े जगहों पे हम दूसरे जगहों में जाना चाह रहे हैं सर। On the occasion, Bhupesh Baghel, Chief Minister, Government of Chhattisgarh was appealed to the people to organize Bobasi. और छत्तीसगढ़ होटेलियर्स एसोसिएशन की ओर से तरनजीत सिंह होरा जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया आए अपने साथियों के साथ। और उसके बाद रविंद्र राज पुरोहित जी और उनके साथी हितग्राहीगण बेल मेटल से निर्मित ये नंदी भेंट किया जा रहा है छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। सारी भेंट हमारे शिल्पकारों के द्वारा तैयार की गई है, बस्तर के शिल्पकारों के द्वारा तैयार की गई है, जिसे बढ़ावा देने के लिए भी ये भेंट दिया जा रहा है। मजदूर दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमन मनाथन, और ये साल मजदूर दिवस हमारे मन पर खास हो गए, काबर के आज मैं आह्वान कर रहे हैं कि बोरे बासी खाना है। सबके अभिवादन करते हुए, बोरे बासी हमन पहली भी खात रहे, जन होटल वाला मन आए रही से पगड़ी बांधे सरदार उरदार मन आए रही से जगह काबर आए रही से वो मन वो सम्मान करीस का बात के आज होटल में वो बोरे बासी खवा है। अपन जन ग्राहक है ते मल्ला एक जन तो बता दी से कि मैं विदेशी आया तेरोल खवा दे बोरे बासी करके करें, ये बोरे बासी खाना है ते वक्त खूब तैयारी करे है।
गरीब मजदूर मन तो किसान मन तो खावे करते, लेकिन ये वक्त जब बोरेबासी के बारे में कहें तो कतको जनमन फिर पता करे कोशिश करी कि बोरे काला के थे, बासी काला के थे, ओकर बोरे का अंतर, बासी का अंतर सब बताया जल्ले। पकाए विधि कैसे होते तेला जानकारी ले कोशिश करे। और आज ये बात के खुशी है कि हमार छत्तीसगढ़िया मन के खाना, गरीब के खाना, किसान मजदूर के जिन हमार जिन बोरे बासी है, आज सब जन खा के ओला फेसबुक में डाला थे। Taranjit Singh Hora, President Hotel and Restaurant Association of Chhattisgarh, appreciated this gesture of Honorable CM. Taranjit said, on CM's call we organized Bobasi in our hotels and many of our association members included Bobasi in their menu. He said, जय जोहार, मैं तरनजीत सिंह होरा, प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन। जय जोहार, मैं आयुष चंदेल और हमारे शेफ अनीश सयाजी होटल परिवार की ओर से माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के तरनजीत होरा ला हार्दिक अभिनंदन करता है कि 1 मई मजदूर दिवस में बोरेबासी खवाए बर जो पहल की गई है ओकर हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, होटल बेबीलोन इंटरनेशनल की तरफ से आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज मजदूर दिवस है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का अपील से हम सब आज बोरेबासी का प्रमोट कर रहे हैं। होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है श्री चरणजीत सिंह जी, उन्होंने भी अपील किया कि इसको प्रमोट किया जाए। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश और छत्तीसगढ़ संस्कृति के साथ साथ छत्तीसगढ़ के खान पान को भी प्राउड वाली फीलिंग लेकर के आए हैं। और अब से 1 मई को हम हर साल लेबर डे के साथ साथ बोरेबासी डे मनाएंगे। जब से मुख्यमंत्री जी ने ये अपील की है कि बोरेबासी डे मनाया जाए तो लोग काफी आगे बढ़ करके आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ी लोग काफी प्राउड फील कर रहे हैं अपनी इस संस्कृति को। You are watching Travel World Online.